So, hello everyone, and welcome to this hands-on session on building portfolio website with HTML, CSS, and JavaScript. Today, we will be walking through the process of creating a portfolio website from scratch, step by step. By the end of these two sessions, you will have a functional and visually appealing portfolio website that showcases your skills and projects. Whether you are a beginner or an experienced developer, this session will provide you valuable insights into the world of. So, let's get started. I hope my screen is visible to all. Yes. Okay. So, in this session, we will be using Visual Code Studio. ठीक है? Let me provide you link for the same. हाँ ये तो जिसके भी लैपटॉप में है नहीं तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज एंड फॉर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फॉर मैक दिस वन. ठीक है. देन वी विल बी यूजिंग these images. Link for the same is also provided you in the chat section. ठीक है. आप लोग इमेजेस को यूज कर सकते हैं या फिर अपनी भी कर सकते हो, लेकिन अभी साथ में चलने के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी आप लोग यही इमेजेस को यूज करो. ठीक है. इनको डाउनलोड कर लो. This is zip file, so it. ठीक है. This we will be using in our portfolio website. Cool. Now let's create a folder. You can type name, your choice. I am typing GDSC portfolio session. Now those image folder here. Okay. आई होप यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा शायद. अगर किसी ने भी यहाँ तक नहीं किया है तो एक बार बता दो. हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा. ठीक है. ओके आदित्य, कैन यू ब्रीफ आपने कहाँ तक कर लिया है? हैव यू डाउनलोडेड इमेजेस फोल्डर? Then you need to extract files from that. इसको
एक्सट्रैक्ट करके अलग से ही खुल जाएगा। अगर किसी की एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है तो मैं इमेजेस को ग्रुप पे भेज सकती हूँ। सभी के एक्सट्रैक्ट हो गए हैं इमेजेस। ओके, फिर जो आपने नया फोल्डर बनाया है उसमें इमेजेस के फोल्डर को पेस्ट करना है। हो गया है सबका यहाँ तक? ओके, नाउ ये हमने फोल्डर बनाया है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन शो मोर ऑप्शंस, देन ओपन विद कोड। ठीक है, फिर ये VS कोड में खुल जाएगा और हम यहाँ पे हमारा इमेजेस फोल्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, सबने यहाँ तक कर लिया है? ठीक है, अब तो सब आसान है। अब आपको एक फाइल बनानी है, index.html। आप कोई और नाम भी रख सकते हो बट ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है, बाकी हम HTML5 यूज करने वाले हैं, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ से आप HTML लिखोगे, फिर यहाँ सेकंड नंबर पे HTML5 है, इस पे एंटर कर देना, ये पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल बी प्रोवाइडिंग टाइटल दैट इज पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, अब हम दूसरी फाइल बनाएंगे दैट इज फॉर CSS, और वो बनाएंगे हम style.css। इसका भी कोई भी नाम रख सकते हो आप लोग, ये थोड़ा सा यूनिवर्सल है। ठीक है, now we will be setting some universal CSS for this file, and for that we have universal selector asterisk, then bracket, then margin 0, padding 0, font family Poppins and sans serif, then box sizing border box। So ये यूनिवर्सल CSS यहाँ तक सबका हो गया है। Now let's insert this or link this to our index file। इसके लिए भी VS में शॉर्टकट है लिंक CSS। कूल, ये ऑटोमेटिकली, इसीलिए हम style.css नाम रखते हैं क्योंकि हर जगह यही फीड रहता है। ठीक है, now let's add some CSS for HTML and body tag। इसके लिए scroll behavior, wait, let me show you the portfolio we will be going to make। Please reshow box sizing, here it is, box sizing border box। We are going to make this portfolio website। This is nav bar, this is header section, after that we will be making about me section। Here we have 3 tabs: skills, experience and education, then we have my services section, and you can see this beautiful hover effect on this। After that my work section, there also we have a beautiful hover effect, then contact me section, and then copyright section।
सो इन टुडे सेशन हम पूरी कोशिश करेंगे हेडर सेक्शन बनाने की, अबाउट मी सेक्शन बनाने की और सर्विस सेक्शन बनाने की। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया है। बॉडी टैग के लिए CSS अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड वी विल बी हैविंग डार्क, that is black, and color, that is text color, we will be taking white. यहाँ तक सबका हो गया है या मैं कोड दिखाऊं? This is the code for basic CSS we applied till now. हो गया है गाइस यहाँ तक? Hello everyone. Am I audible? Okay, okay. ठीक है, अब हम हेडर सेक्शन बनाते हैं। हेडर सेक्शन में ये लोगो आएगा, नेव बार आएगी और ये पार्ट आएगा। ठीक है, सो मूव टू आवर VS कोड, इंडेक्स फाइल। सबसे पहले हम लोग कमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, हेडर सेक्शन starts and another comment, header section ends. Well, shortcut for writing these comments is control plus this question mark button. Good. Now let's create a div with ID header. For ID we use hashtag, and VS Code provides us a shortcut. We write hashtag header, enter, एंड div हमारे लिए ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है। ठीक है, यू कैन यूज डॉट हेडर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, background for this header, design it. Okay, in CSS2 we will be writing first of all a comment, CSS for header section. Cool. So header, सब लोग यहाँ से कॉपी करके लिखना, क्योंकि फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी और फिर CSS अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सो width will be 100%, height will be 100 VH, background image in URL, and we have inserted a folder named as images. So write images, and in that we have image named background.png here. Cool. Enter. Background size, cover, background position, center.
save it and open in browser. You can click here, go live. Okay, सभी का अब तक इतना शो हो रहा होगा. सबने इतना कर लिया. Position, here it is, center. चलो, then let's start making navbar. ठीक है. For that, we will be creating a class named as container. Inside this id header dot container, enter. Cool. Then for navbar, we will be using nav tag. ठीक है. After that, first of all, we want to show logo. So for that, image tag img, enter. In src, we will be giving path, that is images folder, then logo.png. Cool. I'm not writing any alternate text. If you guys want, then you can. Okay. Now for those home about services, we will be using list. For that, we will ul with id side menu. So for that, ul hash side menu. Okay. Enter. Then in li tag, we will be having anchor tag because हमें टेबल बनाना है. तो फिर ए एंटर. HREF में अभी हम हैशटैग डाल देंगे, बाद में इसमें जिससे स्क्रॉल होगा. ठीक है. तो होम. Now we will be duplicating this line with Alt plus Shift plus down button for 5 times. Cool. मैं लिख देती हूँ. ठीक है. अब हम इनके नाम चेंज करेंगे. अबाउट सर्विसेज, portfolio or my work section, then contact. Cool. Save it and see it in browser. सबका इतना शो हो रहा होगा अभी. सबने यहाँ तक कर लिया. Everyone. ठीक है. Let's apply some classes. सबसे पहले कंटेनर क्लास पे कॉपी पेस्ट, एडिंग 10px from top and bottom and 10% from left and right. Then nav tag. So display will be flex for links to appear side by side. Align items center.
Justify content space between flex wrap. Let's see, save it and see it on browser. Here it is. Cool. Now, first of all, we will be styling our logo. So for that, we have added logo class, right? No. Let's add a class here, logo. Cool. Save. And now style a logo and width will be 140 pixel. ठीक है? See. Now we will be styling these elements. So for that, we will target these li tag. So nav, then ul, then li. Nav, then ul, then li. So in this display inline block, list style none and margin 10 px from top and bottom, 20 px from left and right. Save it and move to browser. See. Now we will be styling elements. For that we will be targeting anchor tag. So copy this thing here and a. Then bracket. Color will be not white but little bit of creamy azure. Text decoration none. Font size 18 pixel. Now save it and move to browser. ये देखो. I hope यहाँ तक सबका हो चुका है. ठीक है. Now we will add hover effect in this. So for that we will use nav ul li a colon after, then bracket content will be empty with 0 height 3 px background. We will be adding a color code for this FF004F. Cool. Position absolute we will be taking, and so we need to take position relative here. Cool. Now add left 0, bottom -6 px. Save it and move to browser. Let's add first of all hover effect. Now copy this thing
And here add colon and hover. Full bracket. Width will be 100%. And then add transition here. 0.5 seconds. Cool. Now let's add some headings. First of all, let's see. See, it's working. Now we will be adding some headings and text over here. For that, let's move to index file. And after this nav tag, we will be adding a div with class header text. Cool. Next, we will be adding p tag, and in this full stack web developer. Hmm. Then we will be writing our names in h1 tag. Hi, I am. I want Vani to be highlighted, so we will be using a span tag. Mittal. Then a br tag for line break. Then from Meerut. Cool. Save it and move to browser. Here is the tag. Oh, content. Sorry. Let's style it. So for styling this, we will be targeting this class header text. So copy this one and move to browser dot header text. Cool. Now um, margin top 20%, font size 30 px. Now for header text h1 tag, font size 60 px, margin top 20 px. Cool. As we wanted Vani to be highlighted, so we will be targeting span tag now. And here color, this one. Cool. Save it and move to browser. So here we have done with our header section. I hope everyone is done with this. If anyone is having any kind of problem, then please let us know. Till then I can show you code. This is the code for header section HTML code. You can match. We have 30 seconds.
Now CSS part 1. Here it is. You have 30 seconds. जल्दी जल्दी से मैच कर लो. Now CSS code part 2. Again 30 seconds. Cool. सबने कर लिया यहाँ तक? सबका हेडर सेक्शन शो हो रहा है? A quick reply in the chat section, please. Okay. Let's move to about section. Add another comment. About section starts about section ends. सबसे पहले हम div बनाएंगे with id about. Then again div with class container. Now in this we will be creating two columns. For that, first of all, a div with class row. Then we want two columns. So for first one, about call 1, and just duplicate it with Alt Shift down button and mark it as 2. Now in first one we will be adding an image, and in second one we will be adding text and tabs and all. Cool. So for image we will be using img tag, and for source we have image in images folder and image with name. Let's use work1.png. I am deleting this alternate text. You can use it. This is when our image, जब हमारी image लोड नहीं होती तो उसके लिए वो यूज होता है. ठीक है, हमने तो फोल्डर इसमें ऐड किया तो हमारी इमेज तो लोड होगी. ठीक है, अब हम टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल heading about me. So in h1 tag we will be taking a class subtitle. Then about me. Save it and refresh your browser. You can see this image and about me. Okay. Now let's design this part. First of all, add a comment. CSS code
about section. Cool. First of all, we will be applying CSS on ID about. That is, padding will be 80 px and 0 from left and right, and color will be hashtag AB. Cool. Now you can see space above your image. Okay. Now let's apply CSS on class row. Display will be flex for content side by side. Justify content space between flex wrap wrap. Save it and move to browser. You can see side by side content of both the columns. ठीक है, column 1 and column 2. Now we need to specify width for both the columns. So for that we will be targeting about call 1 first. Copy this and dot paste it in the browser, in the style .css. Here we will be specifying flex basis 35% of total width of 100%. Cool. Now for image dot, again same class and img tag. With 100% in this 35% and border radius 15 px because we want round corners of our image. Okay, save it and move to browser. You can see border radius. Cool. Next, target second column about call to text basis 60%. Now total width we have is 100%. हमने यहाँ 60% दे दी और यहाँ पर 35%. Then we have 5% left. Save this one. You can see a distance between both the columns of 5%. Cool. Next, let's design this subtitle class. Dot control plus V. Font size will be 60 px. Font weight will be 600. Color white. Save it and move to browser here. Cool. Now let's add some description in this section. And we will be adding that in paragraph tag. अपने बारे में आप बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है. अभी यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज करेंगे लॉरम और 80 वर्ड्स विल बी इनफ. ठीक है. सब लोग साथ में चल रहे हैं ना अभी तक.
Chalo. After this paragraph, we will be adding three tabs. In first one, we will display skills. In second one, we will display experience, which is work experience. And in third one, we will display education. So for that, we are creating a div named as tab titles. Tab titles. Enter. In this, we will be having three titles. So p dot tab links, enter, and we will be writing here skills. Now duplicate this two times and add experience here and here education. Cool. Now let's add content for the same. After this one closing tag of div, we are creating another div with class tab contents. Cool. And in there, we will be using UL tag, then li. Let's add a span tag first, then web development, then VR, then a short line about web development. I am writing 4 words of Laura. Cool. We will be providing. Let's duplicate this div for 2 times. Alt plus shift plus down. Cool. Also, this is for skills, so we will provide ID skills. Here we will provide ID experience, ID education. Okay. Now also we will be duplicating this web development line and skills for 2 times. One for cloud computing, second for machine learning. Cool. Here for differentiation we will be duplicating it once. Cool. Let's call it cloud computing. और यहाँ पे इसको एक बार ही रहने दो. ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया है. यहाँ तक सबने कर लिया है. Hello everyone. A quick reply in the chat section. यहाँ तक सबका हो गया या फिर मैं कोड दिखाऊं? लास्ट एल टैग ये लो.
हो गया. Let's design these. So हमने सबटाइटल डिजाइन. अब हम टैब टाइटल्स डिजाइन करेंगे. ये कॉपी दिस वन, डॉट पेस्ट. Display will be flex. Margin will be 20 px, 0, 40 px, 20 px from top, 0 from left and right, and 40 px from bottom. Now let's design these tab links. Cool. Margin right 50 px. Font size 18 px. Font weight 500. Cursor pointer. Now let's save it and move to browser. सबका ही ऐसा शो हो रहा होगा अबाउट सेक्शन अभी. ठीक है, पॉइंटर एंड ऑल. कूल. Let's add hover effect first of all on these tab links. So enter dot tab links colon after content will be empty, width will be 0, height 3 px, background hashtag ff004f, position absolute. Again we will be adding then position relative here. Cool. Then left 0, bottom minus 8 px. Now dot tab links. Let's add another class in this first one, and that is active link. क्योंकि हमें ये स्टार्टिंग में एक्टिव चाहिए तो इसके लिए हम अलग से CSS अप्लाई करेंगे. ठीक है, कॉपी दिस वन, dot tab links dot active link without any space, colon after, width will be 50%. Add transition here. In tab links after, transition will be 0.5 seconds. Save it and move to browser. You can see this. Cool. Now we have added table contents. Let's, यहाँ तक सबका हो गया है. Then we will be going through JavaScript part. ठीक है, सबसे पहले हम ये टेबल कंटेंट्स को डिजाइन कर लेते हैं. ठीक है,
here it is. टेबल कंटेंट क्लास कॉपी कर लो. डॉट टेबल कंटेंट्स ul li list style none and margin 10 px from top and bottom, 0 from left and right. Then dot table contents ul I span color hashtag. We will be taking a code B54769. Font size will be 14 px. Save it. Again dot table contents we can see CSS applied on this part. Cool. नाउ डिस्प्ले इसकी हम अभी के लिए नन कर देते हैं. जब हम क्लिक करेंगे तभी वो शो. ठीक है. अब हमने ये क्लास ऐड की थी टेबल लिंक्स. हम टैब पे भी एक क्लास ऐड करने वाले हैं, एक्टिव टैब फर्स्ट वन पे. कूल. टीएबी टैब. कूल. अब इसको कॉपी कर लो. हमने ये पहले भी स्किल्स पे ऐड की थी और अब भी हमने स्किल्स पे ही की है. ठीक है. पहले हमने टैग लिंक पे की थी, अब हमने टैब कंटेंट पे किया. सेव. नाउ डॉट टैब कंटेंट्स डॉट एक्टिव टैब विदाउट एनी स्पेस डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है. अब हम लोग इस पे ऑन क्लिक इवेंट ऐड करने वाले हैं और फिर उसको जावा स्क्रिप्ट से थोड़ी सी जावा इसमें ऐड होगी. ठीक है. अभी वी कैन सी स्किल सेक्शन. ठीक है. सो यहाँ तक सबका हो गया है. एक बार सब लोग चैट में बता दो जल्दी से. यहाँ तक सबका हो गया है. ठीक है. सो इंडेक्स फाइल में अब हम लोग, हमारे पास ये है टैब लिंक वाला. इसमें हम ऑन क्लिक इवेंट ऐड करेंगे. ऑन क्लिक इक्वल्स टू this, then open tab function bracket skills this id. ठीक है. ये सेम होनी चाहिए. अब एक्सपीरियंस में ऑन क्लिक equals to this open tab bracket experience. cool. और यहाँ पर फिर से ऑन क्लिक ओपन टैब ब्रैकेट
education. Save it. Now, after this comment, we will be adding a script tag. हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अलग से बना सकते थे, लेकिन इसमें इतनी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं है, ठीक है. So we can add a script tag here in index file itself. So first of all, variable var tab links equals to document dot get element by id. नहीं, क्लास नहीं ले लेते. Bracket tab links. Again, variable tab contents equals to document dot get element by class name bracket tab contents. इसको एक बार ऊपर क्लास से भी मैच कर लेना सब लोग. टैब लिंक्स यहाँ से कॉपी करके फिर लिख सकते हो, ठीक है. और टैब कंटेंट्स भी, ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग फंक्शन ओपन टैब ब्रैकेट function space open tab bracket tab name curly braces 4 tab length of tab links, ठीक है. tab link dot class L will be capital list dot remove bracket active link. This will remove active link class, ठीक है. Again for tab content of tab contents curly braces tab content dot class list dot remove bracket active tab. Cool. Save it, and if we move to browser, then we can see we only see content of skills page, okay. So again here even dot current target dot class list
dot add active link, and now document dot get element by id, tab name dot class list dot add bracket active tab. Cool. यहाँ तक सबने कर लिया। एक बार मैं जावास्क्रिप्ट कोड दिखा देती हूँ, सब लोग देख लो। सबने लिख लिया है यहाँ तक? सबका वेब पेज, इसको एक बार रिफ्रेश करके, सबके में इतना शो हो रहा है? हेलो, हेलो एवरीवन। लगता है सब लोग थक गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके हर्षित। किसी को किसी का कोई भी एरर आ रही है, देन यू गाइस कैन आल्सो शेयर योर स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप और डीएम अस, ठीक है? Okay, ma'am. Group that GDSC-MIET, आप ऐड नहीं हो उसमें? एक बार आशुतोष लिंक शेयर कर देगा। ये किसी की कोई भी है तो आप लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है? बाकी कल तक तुम लोग इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो और अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो। Okay, so other sections will be covered in tomorrow's session.